Hello everyone, welcome to your social studies class of class 4th. I hope you all will be fine. Students, this is our first video after your half yearly examination. Now today in this video we will start lesson number 9. Okay, so let's begin our class. Lesson number 9, Major Landforms and Water Bodies. Okay, now what are landforms? Landforms are the natural features and shapes existing on the surface of Earth. Means all the natural features and shapes that exist on the surface of the Earth. They are known as landforms. Okay, for example, I will show you. These are the different landforms. Okay, volcanoes, hills, islands, deserts, ocean, river, jungle, mountains, marshes, waterfall, all these are landforms. Okay, so all these natural features and shapes that exist on the surface of Earth, they are known as landforms. They have different physical characteristics, means they appear physically different from each other and are spread all over the planet Earth. Okay, they are spread all over the planet Earth, means Earth पर ये सब जगह पर spread out है. You all must have noticed that the earth is not the same everywhere. The land part of the earth is high at some places and low at other. Means earth is not same everywhere. अर्थ जो है हर जगह एकदम प्लेन सरफेस नहीं है. कहीं पर अर्थ हाई कुछ उठी हुई है, ठीक है, और कहीं पर थोड़ा लो में है. ओके, the land part of the earth is at high at some places and low at the other places. Some areas are lush green while the others are dry barren lands. Means कुछ areas जो है बहुत greenery है वहाँ पर बहुत green है, plants है, ठीक है, फॉरेस्ट में. और कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो बहुत ड्राई और बैरन है. बैरन मीन्स जो वेजिटेशन के लिए लैंड अच्छी नहीं होती है, मीन्स जहाँ पे अच्छे से वेजिटेशन ग्रो नहीं करती है, दैट इज़ नोन एज बैरन लैंड. ओके, सो कहीं पर जो अर्थ के एरियाज है वो काफ़ी ग्रीन है और कहीं पर बहुत ड्राई और बैरन लैंड है. Oceans and continents constitute to form very large landforms. और जो oceans और continents हैं they constitute very large landforms. मीन्स वो अर्थ पर बहुत ही ज़्यादा स्पेस एरिया लिया हुआ है उन्होंने. मीन्स ओशंस आपको पता है कि कितने बड़े होते हैं. कॉन्टिनेंट्स और ऑल्सो यू ऑल नो व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स, है ना. सो दीज आर वेरी लार्ज landforms. Okay, now whereas mountains, vast plains, plateaus, these come under the category of large landforms. Means oceans and continents are very large and mountains, plains, जैसे जहाँ पर हम लोग रहते हैं plains area में, plateaus, ये सब large landforms हैं, but smaller than these oceans and continents. Then the third category is the mountain, hills, valleys, river banks and hillside slope. All these form intermediate and small landforms. Means they occupy very small area on the earth. Okay, so these are this earth is divided into three landforms. Very large, that is oceans, continents. Then large, where mountains, plains and plateaus. And small, where these hills, valleys, river banks are there. Okay, now what are mountains? Mountains are the natural elevation on the earth's surface. They are the highest landforms usually found with broad base and conical top with steep sides. Now what are mountains? Mountains are natural elevation. Natural elevation means that are at some height from the earth's surface. Okay, these are the natural elevation on the earth's surface एंड दे आर हाइएस्ट लैंडफॉर्म्स. मीन्स ये हाइएस्ट लैंडफॉर्म्स हैं. आपको पता है कि माउंटेन्स काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी हाई, उनकी काफ़ी हाइट ज़्यादा होती है. सो दे आर द हाइएस्ट लैंडफॉर्म्स एंड दे आर यूजली फाउंड विद अ ब्रॉड बेस. मीन्स उनका जो बेस होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है और जो टॉप होता है दैट इज़ कॉनिकल टॉप. Okay, and with steep sides, these slanting sides are known as steep sides. Okay, these are known as steep sides. Okay, and they occupy almost 1/4 of the total land area of the earth.
और ये माउंटेन्स जो है हमारी टोटल जो अर्थ की लैंड है उसका 1/4 पार्ट। आपको पता है फ्रैक्शंस में कैसे बोलते हैं 1/4 किस, मतलब कि अगर सपोज ये हमारी पूरी अर्थ है तो इसका 1/4 पार्ट में क्या है, सिर्फ लैंड, मीन्स एक ही जगह पर नहीं, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, लेकिन ये बता रहे हैं कि हमारी अर्थ का टोटल का 1/4 पार्ट जो है उसमें माउंटेन्स हैं। ओके, द पॉइंटेड टिप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड पीक। ये जो माउंटेन की टॉप ये जो टिप है, ठीक है, पॉइंटेड टिप, दिस इज नोन एज peak. A series of mountains is called a mountain range. When the mountains are in a series, okay, they are known as mountain range. The Himalayas are the longest mountain range. Himalayas जो है longest mountain range है, मीन्स वो काफ़ी दूर तक spread out है, ठीक है, बहुत दूर तक फैला हुआ है. The temperature on the mountains remain less as compared to the plains. जो टेम्परेचर होता है वहाँ माउंटेन्स में वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू द प्लेन्स. प्लेन्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तभी यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, और माउंटेन्स में टेम्परेचर कम होता है और वहाँ पे थोड़ा ठंडा रहता है मौसम. द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. और जो माउंट एवरेस्ट की जो पीक है वो सबसे हाइएस्ट माउंटेन पीक है इन द वर्ल्ड. Okay, so these are about mountains. Now, plateaus. Plateaus are elevated highland with a more or less flat surface on its top. It has a large area on its top and a steep or gentle slope on its side. Means जैसे mountains में जो हमारी peak होती है वो काफ़ी वो एक pointed होती है, लेकिन जो plateaus होते हैं उसकी जो टॉप पार्ट है वो थोड़ा सा फ्लैट हो सकता है. ओके, मोर और लेस फ्लैट सरफेस ऑन इट्स टॉप. ओके, इट हैज़ अ लार्ज एरिया ऑन इट्स टॉप एंड अ स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप ऑन इट्स साइड. जैसे माउंटेन्स में हमारा जो स्लोप होता है वो काफ़ी स्टीप होता है, लेकिन इसमें थोड़ा जेंटल स्लोप होता है, मीन्स दे आर नॉट स्टीप. ओके, और यहाँ पे ये जो फ्लैट सरफेस होता है थोड़ा, और जो इसकी साइड्स है ये जो इसकी ये जो स्लोप है ये थोड़ा जेंटल स्लोप होती है. दे आर सराउंडेड बाय लोअर लैंड्स और माउंटेन रेंजेस. और ये सराउंडेड हो सकते हैं लोअर लैंड से भी और माउंटेन रेंजेस से भी. ओके, ड्यू टू द फ्लैट टॉप दीज लैंडफॉर्म्स आर ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड्स और हाईलैंड्स. क्योंकि जो इनका टॉप पार्ट है वो थोड़ा फ्लैट होता है, फ्लैट टॉप होता है इनका, इसलिए इनको टेबल लैंड्स और हाईलैंड्स भी बोलते हैं. द हाइट ऑफ द प्लेट्यूक्स वेरीज फ्रॉम a few hundreds meter to 1000 meters. मीन्स ये ज़्यादा इनकी जो हाइट है वो कुछ few hundred meters to 1000 meters तक हो सकती है. The Deccan Plateau in India, Western Plateau in Australia, Mongolian Plateau, etc. are some important plateaus in the world. Okay. Now, plains. Plains are the vast stretches of land, flat land. जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं we live on plains. Okay, so plains are the vast stretches of flat land. यहाँ पे जो land है वो flat होती है. There is no elevation. They have little change in elevation, means they have a very little change in elevation, but ज़्यादा elevated lands नहीं होती है. Little elevated land होती हैं, ज़्यादा elevated land नहीं होती हैं. Okay, मीन्स थोड़ा कहीं से ऊंचा थोड़ा सा नीचा हो सकता है, बट ज़्यादा एलिवेटेड लैंड्स नहीं होती है. एंड आर यूजली लोअर देन द लैंड सराउंडिंग दैम. और वो उनके जो सराउंडिंग जो होते हैं उनसे थोड़ा नीचे पे होता है. प्लेन्स नियर द ओशियंस आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स. और जो प्लेन्स ओशियंस के पास में होते हैं उनको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स. मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़ आर लोकेटेड इन प्लेन्स एज इट इज़ ईजियर टू बिल्ड हाउसेज, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन द प्लेन्स. जो ज़्यादातर बिग सिटीज़ होती है वो प्लेन्स एरिया में होती हैं, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर हाउसेज, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, और भी कुछ भी स्ट्रक्चर्स बनाने वहाँ पर ईजी होता है, बिल्ड करना वहाँ पर ईजी होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़ आर लोकेटेड इन प्लेन्स. हैंस दे आर हैवीली पॉपुलेटेड. और इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, Nile Valley plains of Africa, Yangtze plains of China, etc.
are some significant plains of the world. Okay. Deserts. Deserts are large, dry, and barren area of lands which receive little or no rainfall throughout the year. Deserts जो है large भी होते हैं, मीन्स काफ़ी एरिया में होते हैं, ड्राई होते हैं, और barren areas of land which receive ड्राई होते हैं, सूखे मतलब वहाँ बारिश कम होती है. barren lands मैंने आपको बताया था, barren means and which receive very little or no rainfall throughout the year, जहाँ पे पूरे साल सिर्फ थोड़ी बारिश होती है या फिर नहीं होती है. ओके. The weather conditions in desert is extreme. It is very hot in day and very cold at night. Means जो weather होता है desert में वो बहुत extreme होता है. Means दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडा होता है. There are two types of deserts, hot deserts and cold deserts. Hot deserts are covered with sand. Animals like camels, snakes, lizards, and rats can be found there. Thar Desert is in India is a hot desert, and cold deserts are covered with snow. They receive snowfall during the winter, and animals like penguins, whales, and fursies can be found in these deserts. Okay, hot deserts में आपको ये एनिमल्स मिलते हैं, कैमल्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, रैट्स एक्सेट्रा, एंड वहाँ वो पूरा कवर्ड होता है सैंड से. And the cold desert is covered with snow, and the animals like penguins, whales, fursies are found in these deserts. Antarctica is the world's biggest cold desert. Okay. Now, islands. An island is a piece of land that is surrounded by water on all sides. Island क्या होता है? A piece of land that is surrounded by water on all the sides. The Andaman and Nicobar and the Lakshadweep are the Indian islands situated in the Bay of Bengal and the Arabian Sea, respectively. Okay, these are the two Indian islands that are situated in Bay of Bengal and the Arabian Sea. Okay. Now, continents. The continents can be defined as huge land masses rising above the sea level. These continents are separated from one another by huge water bodies. Continents, what are continents? Continents are can be defined as a huge landmass, बहुत बड़े बड़े land masses rising above the sea level, जो sea level से थोड़े ऊपर होते हैं. Okay, and they are separated from one another by the huge water bodies, और ये एक दूसरे से separate होते रहते हैं by the huge water bodies, that is oceans. Okay, now there are 7 continents on the earth: Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. You can see in this world map, these are the land masses, huge land masses that are known as continent. Okay, Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia, and Antarctica. Okay, and these are separated by huge water bodies, that is these oceans. Okay. So first is Asia. Asia is the largest and the most populated continent on the earth. Asia सबसे बड़ा और highly most populated continent है अर्थ का. It is home to half of the world's population. पूरी world में जितनी population है उसका half population Asia में ही है. It comprises 48 countries. Asia में 48 countries हैं, and Mount Everest is the highest peak of the world. It is located in Asia. अभी हमने पढ़ा था that Mount Everest is the highest peak of the world and it is located in Asia. We also live in Asia. The combined landmass of Europe and Asia is called Eurasia. Okay, these combined landmass of Europe and Asia is known as Eurasia. Now second is Africa. Africa is the second largest continent of the earth. Africa second largest continent है. It is also second largest in terms of population. Second largest in terms of population also. First is Asia and the second is Africa. And it comprises of 54 countries and is home to about 15% of the world population. Means world में जितनी भी population है, world की जितनी भी population है, उसका 15% लोग यहाँ पर रहते हैं. And it is also called dark continent because very little
was known to the outside world until the last century, क्योंकि लास्ट सेंचुरी तक यहाँ के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे. ओके, तो इसीलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं. The world's longest river, the Nile, lies in this continent. Okay, and Nile, that is the world's longest river, lies in this continent, that is Africa. Third is North America. North America is the third largest continent of the world. Okay, first is Asia, second Africa, and then North America. It lies in the northern hemisphere and the western hemisphere. It is the fourth largest continent in population. Okay, in terms of population, it is fourth largest continent. 7.5% of the population lives in the continent North America, and it is surrounded by Pacific Ocean in the west and Atlantic Ocean in the east, Arctic Ocean in the north, and the Gulf of Mexico in the south. Means it is surrounded by all these oceans. North America is connected to South America by a narrow stretch of land called the Isthmus of Panama. Means this North America is connected with South America by this narrow stretch. You can see this narrow stretch. North America is connected to South America, and this is known as Isthmus of Panama. Okay. Now South America. South America is the fourth largest continent and roughly triangular in shape. Okay, it is triangular in shape. Roughly, not exactly triangular, but roughly, लगभग एक triangle shape का ही है. This continent is fifth in terms of population, and South America is home to world's longest river, the Amazon. जो Amazon river है वो South America में है. It is generally considered as the subcontinent of Americas. Okay. The Andes mountain range, which runs through its land from north to south, is called the longest mountain range in the world. Means जो longest mountain range है, that is the Andes mountain range, वो यहाँ पर ही है. Next is Antarctica. Antarctica is the fifth largest continent in terms of area after Asia, Africa, North America, and South America. And it is twice the size of Australia. Means ये Australia का size में twice है. It is the southernmost continent of the earth. ये south में है. That's why it is the southernmost continent of the earth, and it is surrounded by the Southern Ocean. और जो Southern Ocean है ये उससे surrounded है. It is the only uninhabited continent in the world. Means that is without inhabitants. Okay. And there is no permanent human settlement here. और यहाँ पर कोई भी permanent human settlement नहीं है. Antarctica is also known as a frozen or white continent. Antarctica is the coldest, driest and windiest continent. ये बहुत ही ज़्यादा coldest, driest and windiest continent है. Here the temperature has reached minus 89 degree Celsius. Okay, मतलब इतना कम temperature है Antarctica में. Okay. Now next is Europe. Europe is the second smallest continent in the world. Means second number पर जो सबसे smallest continent है, that is Europe. And nearly 2% of the earth size. ये पूरी earth का जितना size है उसका सिर्फ 2% है. It lies totally in the northern hemisphere. ये northern hemisphere में है. And it is the third most populous continent after Asia and Africa. Means ये जो populous है मतलब population के according ये third most है after Asia and Africa. Europe comprises 50 countries and takes up 6.8 of the world's total land area. Means पूरी total जो land है उसका 6.8% यूरोप है. And it is separated from Asia by the Caspian Sea, Caucasus Mountains and the Black Sea. Okay. Now last one is Australia. Australia is the smallest continent in the world. सबसे smallest continent है world में. And it is the only continent that is also a country. और ये अकेला ऐसा continent है जो country भी है. Australia is surrounded by water from all sides. हर side से ये water से surrounded है. And that is why it is also called island continent. और इसको इसलिए island continent भी बोलते हैं क्योंकि island क्या है? A mass of land that is surrounded by water from all sides. So that's why Australia is also known as island continent because it is surrounded by water from all the sides.
It is surrounded by the Indian Ocean in the west, Southern Ocean in the south, the Pacific Ocean in the east, and the Arafura Sea and Timor Sea in the north. इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड और ये सबसे ज़्यादा लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में. सबसे कम पॉपुलेशन इसी में है. एंड इट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर में. Okay, so these are the 7 continents. Now what you have to do in homework, you have to read this lesson up to here so it will be more clear to you, and further explanation of the lesson we will continue in our next video. Okay, thank you.